Good afternoon, dear students. Welcome back once again in your computer class. Here, I'm going to start the very first chapter of your annual syllabus, and that is your chapter number 7. The name of the chapter is Conditional Statements in Java. Now, firstly, you should know what are statements. When you will come to know what are statements, then we will combine it with the term conditional, and the whole term we will merge together, and obviously it will become what? Conditional statement in Java. We have studied Java already and we have made so many programs, right? Now statements means what? Statements means any premises. Statement means any premises, or we can say you can say any instruction. ठीक है, that is your statement. For example, if I say this book is mine, it is a statement. My name is this, simple statement. If I say my age is 20, simply a statement, right? If I say any person is eligible for vote, any person is eligible for vote, what it is? Statement again. Now the question is, what is conditional statement? कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. लाइक इफ आई एम सेइंग अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट. सो नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट ओनली, कि हमने एक स्टेटमेंट बोल दिया है कि कोई भी पर्सन वोट दे सकता है. बट इफ आई से अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट if age is greater than 18, if age is greater than 18. Now I put a condition in this statement. What is the condition? If age is greater than 18. Now this is what? It is your condition, and the whole statement will become a conditional statement. मीन्स हमने एक स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि अगर किसी भी पर्सन की एज ग्रेटर देन 18 है, देन ओनली पर्सन कैन वोट, अदरवाइज नॉट. सो दिस विल बिकम योर कंडीशनल स्टेटमेंट. बट द थिंग इज दैट वी कैन नॉट राइट सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर वैलिड इन इंग्लिश लैंग्वेज बट नॉट इन जावा. सो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस सिंपल स्टेटमेंट in terms of Java, how we will convert it, this is my task. So this thing we will study in this chapter. हम क्या study करने वाले हैं कि हम normal statements को, हम जो conditional statements है उसको कैसे apply कर सकते हैं अपने programming language में, ये हम discuss करेंगे in this chapter, right? Now see, there are 3 topics which we need to cover in this chapter. This is first one is your introduction, second is your if statement, third is if else statement. Now these 2 topics are very very important, and now this is the base of your programming. If your base will not be strong, then obviously आपका जो programming है, because you know कि up to 12th you have to study the programming, and when you will move to 9th class or 10th class, the programming will be very vast, right? तो and you cannot escape, or आप जो है you have to study this subject. Computer is the compulsory subject, right? And there is a 60% programming is there in 9th class and 10th class, so you have to focus on programming especially, right? So this is the base. तो आपको यहीं से concentrate होके चलना है. अगर आपको programming नहीं समझ में आती है, you just put your queries again and again, right? First topic is your introduction. Now read out what is given. Generally, a program executes its statements from beginning to end, but not many programs execute all their statements in strict order that they are written. Most programs decide what to do in response to changing circumstances. These programs only store the data, but they also manipulate the data
in terms of consolidation, rearrangement, and modification. To perform their manipulative miracles, programs need tools for performing repetitive action, for making decisions, etc. So Java provides such iteration statements. Now what does this paragraph means? It says what? If we are having any problem, if we are having any question, then we design a program, we design a solution of that problem, right? Solution of the problem means what? We write some statements. And these statements will make a complete Java program. जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं. वो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, है ना. और वो स्टेटमेंट्स का टास्क के उसका जो एम है वो क्या होता है, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना. उसी के लिए तो हमने वो स्टेटमेंट्स लिखे हैं. बट द थिंग इज इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट दी स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. यानी कि हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे वन आफ्टर दी अदर एक ही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो, कि पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट 2 चलेगा, देन स्टेटमेंट 3, देन स्टेटमेंट 4. इट इज़ नॉट कंपल्सरी लाइक दैट, राइट. यानी कि हम स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 4 पे भी जंप कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट 4 से स्टेटमेंट 10 पर भी जंप कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन आर रिक्वायरमेंट. हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा क्या क्वेश्चन है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, हम जब स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होते हैं कंप्यूटर में. वो क्या हो सकते हैं, रीअरेंज भी हम उनको कर सकते हैं, right? So this was the complete summary of your introduction paragraph. Now moving on to next here, programming constructs. A program statement may be executed. एक प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे हो सकते हैं, सीक्वेंशियली, सिलेक्टिवली और आइटरेटिवली. Every programming language provides the constructs to support sequence, selection और iteration. जब भी हम कभी स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट को हम सीक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिलेक्टिवली भी कर सकते हैं और आइटरेटिवली भी कर सकते हैं. तीनों का मतलब क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है. सी, फर्स्ट वन इज सिलेक्टिव, सीक्वेंशियल सॉरी. नाउ दिस इज माई स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 statements, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? मैंने 6 स्टेटमेंट्स लिखे. जैसे कि हम लिखते हैं ना पब्लिक क्लास ए या पब्लिक क्लास नंबर, फिर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन आई टेक सम वेरिएबल्स लाइक इंट लेंथ कॉमा ब्रेथ, देन आई टेक व्हाट कि L is equal to 10, B is equal to 20, देन आई अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन आई प्रिंट द वैल्यू. सो ऐसे करके हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना. तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्वेंशियली का मतलब क्या होगा कि पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, देन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6 in a particular sequence from top to bottom. This is known as your sequential programming construct. यानी कि जब आप प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, प्रोग्राम को बना रहे हो, तो वो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, राइट. नेक्स्ट वन हियर कम्स सिलेक्टिव. सिलेक्टिव का मतलब होता है सिलेक्शन. लाइक इफ़ आई हैव 2 ड्रेसेस, सो आई हैव टू सिलेक्ट कि शुड आई वियर दिस ड्रेस और दैट ड्रेस, मुझे कौन सी पहननी चाहिए. सो आई विल सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट करूँगी ना कि या तो मैं इसको पहनूंगी या मैं इसको पहनूंगी. इज दैट सो? सेम हियर. सेलेक्टिव का मतलब होता है कि या तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, या स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, समथिंग लाइक दिस. हम देख रहे हैं क्या कि स्टेटमेंट 4, 5, 6 शुड गेट एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर एज दे हैव रिटन, बट आई वॉन्ट अ सिलेक्शन इन स्टेटमेंट 1, 2 और 3 कि कौन सा वाला चले. तो आई कैन अप्लाई द कंडीशन ऑल्सो. दिस इज नोन एज सिलेक्टिवली. द थर्ड हेयर कम्स आइटरेटिव. आइटरेटिव का मतलब होता है व्हेन आई वांट टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली.
इफ़ आई वॉन्ट टू परफॉर्म अ एक्शन रिपीटेडली, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी काम मुझे बार बार कराना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइट्रेटिव। यानी कि किसी भी प्रोग्राम में अगर हमको बार बार कोई चीज़ रिपीट करानी है तो वो टास्क जो होता है दैट इज़ नोन एज योर आइट्रेटिव। गॉट इट? देन here it is given about sequence. तो sequence construct means that the statements are being simply executed sequentially. तो जो हमारे statements हैं वो क्या execute हो रहे हैं, simply execute हो रहे हैं, sequential order में execute हो रहे हैं, जैसे हमने लिखे हैं अपने program के अंदर, in the same way they are going to execute, right? Next one is your if statement. So as we have studied, we are having three forms, three types of programming construct. तो sequential में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, sequential में तो जैसे लिखा है वैसे ही आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा selectively, तो ये जो if statement है ना, if statement is used for selection, that means for selectively programming construct. Selectively programming construct, which helps us to select between two conditions, two or more conditions. Okay, read out what is given here. If a statement is used to check one condition at a time, यानी कि if के अंदर हम क्या लिखते हैं, condition लिखते हैं। if के अंदर what we write a condition. Now it is used to check one condition at a time. It means that if a user wants to check more than one condition, say 3 conditions are there, then 3 if statements are required. क्योंकि आपको पता है कि एक if सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर सकता है. So if you want to check 2 conditions, how many number of if you require? Answer is 2. Correct. If you want to check 3 conditions, then how many if you require? 3. If you want to check n number of conditions, then how many number of ifs are required? n. Means एक if statement जो है वो आपका सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर सकता है. तो 2 कंडीशन चेक कराने के लिए 2 if चाहिए, 3 कंडीशन चेक कराने के लिए 3 if चाहिए. So same here given. Got my point? Next here comes about syntax. Now what is syntax? Syntax का क्या मतलब होता है? Syntax का मतलब होता है format. Syntax means format. What is format? Like if you know कि आप कोई सेंटेंस बनाते हो इंग्लिश में, ग्रामर में अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है ना कि कहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे आपको अपना प्रेडिकेट रखना है. ठीक है, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिंटैक्स और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. ठीक है, अब जैसे कि फॉर्मेट क्या होता है, लुक एट हियर. फर्स्ट वी राइट इफ. क्या लिखते हैं सबसे पहले? इफ. नाउ इफ विल बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स. इफ के अंदर वी राइट हियर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोज ब्रैकेट्स. ओके, इनसाइड दिस इफ वी राइट कंडीशन. व्हाट वी राइट? कंडीशन. अब ये कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि आप यही कंडीशन CONDI लिख के आओगे. कंडीशन का मतलब है ये जनरल टर्म्स में भी आ सेइंग कंडीशन. नाउ कंडीशन कैन बी एनीथिंग. ओके, वी राइट ओपनिंग ब्रैकेट, then we write some statement. Statement is represented by S1 here. If we are having more number of statement, I will write S2. If one more statement is there, I will write S3, and after that I will put a curly bracket. Okay, so this is my syntax here, where this bracket is known as your opening curly bracket. You can write it in your book what it is, opening curly bracket. What is this S1 and S2? These are your statements. These are your statements. Now we will write a condition here in this. Now when we execute our program, so this condition will be checked. Now this condition can have 2 solutions. इसके 2 possible solutions हो सकते हैं. Either this condition will be true or this condition will be false.
if this condition is true, whatever condition we have specified, if this condition is true, then these set of statements S1 and S2 will be our answer. यानी कि हम अगर condition true होती है तो ये हमारा answer हो जाएगा. My control will come here and S1 and S2 will be my answer if condition is true. But if condition is false, then I will come out of this condition, means out of this closing curly bracket. Got my point? If the condition is false, then my control will come out of the closing curly bracket. Now you know where is the closing curly bracket now? Closing curly bracket is this. This is your closing curly bracket. This one is your opening curly bracket. And this is your complete syntax. See, after this, they have written here dots. Now what this is dot means, it is your statement number 2. Now they have put again dots, it means statement 3. If you want to add on some more, स्टेटमेंट 4. तो ये जो डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं. ओके, आफ्टर दैट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट. नाउ व्हाट इज गिवन हियर? इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, if the condition is true, then the statement following the condition statements will perform. That means अगर condition true है तो आपने जो statements लिखे थे ना S1, S2, S3 वो execute हो जाएंगे, ठीक है. और अगर वो condition false हो गई तो आपके execute जो statements हैं वो execute नहीं होंगे, right? So this is enough for today's class. In the next class we will discuss about the question. That means some programs we will do based on this concept. Right? So that's all. Thank you.